Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Legal Masters. We're going to be discussing immigration, litigation and representation. And obviously हमारी जो advice होती is basically generic information, generic advice. अगर आपका कोई issues हैं, you need to contact your solicitors or your legal representatives. आपसे last program में obviously we run out of time because of the shortness of the program and also so many calls we did receive. उसके माज़रा करते हैं, but inshallah कोशिश ये करेंगे that we'll try to answer as many questions as possible in this small time. जो छोटे टाइम में कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा questions आपके लिए और उसके जवाब भी दें. And as usual, my team member is going to be here today, Shai Mansoor. Welcome to the program. Thank you, Imran bhai. And Shai Saab, obviously we need to discuss some of these issues. अपने views को बताते चलते about the spouse visas because number of issues and number of जो calls आई थी पहले it was based on this. And इससे पहले हम डिस्कस करने से पहले व्यूज़ को बताएंगे अगर आपके पास कोई इशू हो regarding anything legal then we'll be more than happy to take your call. एक कॉल आ रही है इसे शामिल करते हैं before we start the program. Hello, welcome to Legal Matters. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आप कौन कहाँ से? मेरा नाम अली है जी और मैं साउथ से बात कर रहा हूँ. ठीक है. मैं जरा शाहिद मंसूर साहब से बात करना चाह रहा हूँ. जी बोलिए. जी मैं असल में मैंने अभी रिसेंटली एक्सटेंशन अप्लाई की है PA2 की और मेरा वीजा जो उनसे उन्होंने मुझे इंटरव्यू की कॉल की है. मेरा वर्क परमिट है कंपनी की तरफ से. Okay. तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें इंटरव्यू की कॉल उन्होंने मुझे क्यों की है. ठीक है. ओके. मैंने 2012 में मैंने ट्राई किया था लेकिन मैंने खुद मैंने एग्जाम दिया था जाके और वो लीगल था. उसके बाद जी ठीक है. मैंने अपनी वाइफ का वीजा भी अप्लाई किया. मेरी वाइफ का वीजा भी लग गया. मैं पाकिस्तान से वापसी जब एयरपोर्ट से आया उन्होंने मुझे पूछा लेकिन अभी इंटरव्यू की कॉल की है तो मैं पता करना चाह रहा हूँ कि ये ट्राइक के सिलसिले में कॉल इंटरव्यू होगा या क्या इसमें क्यों उन्होंने कॉल की. और ये इंटरव्यू जी आपने बताया था ट्वाइक आपने कब दी थी? हाउ लॉन्ग अगो? मैंने 2012 में किया था जनवरी मार्च में. ठीक है. राइट समझ गए. ओके. अब आपको इंटरव्यू के बुला रहे हैं. आप प्रोग्राम वॉच करें. अली साहब आपको जवाब देंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल की. थैंक यू फॉर दैट. आगे बढ़ते कॉल आ रही से शामिल करते हैं. वेलकम टू लीगल मैटर्स. हेलो. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आप लाइव प्रोग्राम पे जी ये लाइव ऑन प्रोग्राम है. आप अपना नाम बताएं क्वेश्चन बताएं प्लीज. जी मिसेस अकबर बात कर रही हैं. क्वेश्चन मेरा ये है जी कि मेरे हस्बैंड के पास ILR है. ठीक है. और बेटी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है. सिचुएशन ये है कि मेरे हस्बैंड ने उस वक्त जो अपना ILR जब ले रहे थे 10 इयर्स के बिहाफ पे उन्होंने मेरा अप्लाई नहीं किया था फाइनेंशियल इश्यूज पे. ठीक है. तो जो उनका जो पुराना वीजा है वो जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है जो SMP टाइप का जो होता है उसकी मैं मतलब अभी तक डिपेंडेंट हूँ. मुझे तकरीबन यहाँ पे 9.5 इयर्स हो गए. मेरे 10 इयर्स मार्च में कंप्लीट होंगे. ठीक है. तो मेरा वीजा जो है वो अभी इस मंथ के 22/22 को एक्सपायर हो रहा है. ठीक है. तो मेरी किसी एक सोलिसिटर से बात हुई थी तो मैं जब कंफर्म करना चाहती हूँ ऐसा लॉ है या नहीं है. तो उन्होंने मुझे कहा कि आप पहले क्योंकि आपके 6 मंथ अभी हो जाएंगे तो आप अभी FLR वो कर लें क्योंकि मैं जो अर्न का जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट नहीं कर पा रही जो सैलरी का जो होता है. ठीक है. तो इसीलिए मैं वो अप्लाई कर रही हूँ उसकी क्योंकि मेरे पास अभी सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो इस टाइम थोड़ा सा मैं मुझे एक्सटेंड करके फिर SP डालूंगी. फिर उसके बाद मैं ILR अप्लाई करूंगी. ठीक है. और मेरा जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है मेरे पास तो वो नवंबर में मतलब एक्सपायर हो रहा है जी. तो अगर होम ऑफिस इतने ऐसे तक अपने पास पासपोर्ट रखते हैं ठीक मैं है. 20 मिनट से कहूँ कि मुझे पासपोर्ट आप दे दें ताकि मैं इसको एक्सटेंड करा लूँ अपनी पाकिस्तानी एम्बेसी से. ऐसा पॉसिबल होगा या नहीं होगा या अगर मैं अभी जो O अप्लाई कर रही हूँ उसके साथ अगर मैं अपना पासपोर्ट पाकिस्तानी पासपोर्ट एक्सटेंड कर लेती हूँ मतलब जो एक्सपायर हो रहा है. ओके. तो इस सिचुएशन में मतलब मुझे प्लीज गाइड कर देंगे क्या मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो जाए किसी जी. आप अपना नाम बताती चलें. मिसेस मिसेस अकबर. ठीक है मिसेस अकबर बहुत बहुत शुक्रिया जी. आपको बताएंगे कोशिश करेंगे आपको एक्सप्लेन देंगे एक्सप्लेनेशंस के बारे में. एक और कॉल आ रही है शामिल करते हैं. वेलकम टू लीगल मैटर्स. हेलो. Hi, you're live on the program. Welcome to the program. And who's calling? And can we have your name, please? Hi, this is Amit. I'm calling from Basildon. Okay. I've just got a quick question. I'm applying for ILR. Okay. Indefinite leave. And in the application form, it's asking for if I have been known by any previous names in the past. Actually, at the time of birth, I had a passport in which my surname was different.
and but since I've been in the UK for the last 10 years, I've only used my current name. So in my ILR application, should I tell them that at the time of birth, my surname was different? What about it? What previous applications to that? What concept आपका? Which application have you been granted? Was it what basis? Yes. Previous application मेरा student visa था. Student visa. फिर वो ठीक है. Tier 2 हुआ. ये हम आपसे मालूम करना चाहिए. Student visa फिर आप Tier 2 पे गए, yeah? हाँ जी. Okay. अब मैं work permit पे काम कर रहा हूँ. Right. And during that application, आपने क्या नाम डाला था? आपने नया नाम डाला था, obviously. हाँ जी. Yes. Okay. UK हमेशा नए नाम से आया था अपने. ठीक है. Okay then. So your passport shows that the previous name. जो अभी present name. Yeah, my passport shows my present name. Present name, but previously you had a different name. Yeah. ठीक है, हम आपको बता दें शहजाद साहब. Thank you for your call. Keep watching the program. आपको जवाब देंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. आगे बढ़ते हैं. शाहिद साहब, obviously we're going to have a number of calls coming in. लोगों से हमने lines इसी वजह से खोली हैं so that people can start ringing. Before we just answer these questions इनके तो जवाब देंगे अभी कोशिश ये करेंगे generic advice दे रहे हैं हम लोग and we'll answer them. But let's just carry on talking. जो हमारा इस वक्त जो big issue जो चल रहा है at the moment is still the spouse visa. The requirement was 18,600 and इसके बारे में this was disproportionately unfair. Absolutely, yeah. I mean, this has been challenged in the courts as well on the basis that the UK minimum wage is £7.20. So if even somebody works throughout the year, that only equates to 14,900 thereabouts, yeah. You know. So still there is a big shortfall in terms of what the Home Office deems to be the minimum and what the majority of people can earn on minimum wage. But obviously इसमें तो बड़े मसले बन रहे हैं, big issues. एक कॉल आ रही है, शामिल करते हैं. Welcome to Legal Masses. Hello, अस्सलाम वालेकुम जनाब. वालेकुम सलाम. कौन साहब कहाँ से और ये live on program? जी जनाब, थैंक यू. मेरा नाम चौधरी अकबर है और मैंने बात कर सकता हूँ इनसे बिल्कुल. आप live program पे अपना question बताएं अकबर साहब. You're welcome to the program. आप अपना सवाल बताएं please. हेलो जी, आप लाइव प्रोग्राम पे अपना सवाल बताएं. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. आप अपना क्वेश्चन बताएं, आप लाइव ऑन प्रोग्राम है. मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई आदमी कंपनी वगैरह कोई बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, 2-3 साल तक वो बिजनेस भी करते हैं, लेकिन बिजनेस करने के बाद भी अगर वो कंपनी को अपनी कंपनी को डोरमेंट शो करते हैं तो उसके बारे में क्या मतलब किया जा सकता है? क्या मतलब आपका सवाल क्लियर नहीं है. आप कह रहे हैं डोरमेंट उसे रखना चाहते हैं, उसका क्या करना चाहते हैं? थोड़ा सा एक्सप्लेन करें. मैं एक्सप्लेन ये करना चाह रहा हूँ जी. कोई अगर मैं कंपनी बनाता हूँ, 3 साल उसको ऑपरेट करता हूँ, ठीक है, लेकिन कंपनी हाउस में उसके अकाउंट्स में कंपनी हाउस में मैं शो करता हूँ ये डोरमेंट कंपनी है. ओके, डोरमेंट कंपनी समझ गए सर? बिल्कुल समझ गया, आपका बिल्कुल समझ रहे हैं. ठीक है. तो मुझे ये बताएंगे इसके लिए मेरे खिलाफ क्या हो सकता है, या मुझे क्या जुर्माना होगा, कंपनी हाउस क्या होगा? ये आपका जुर्माना ये अकाउंट्स के बारे में होते हैं, रिटर्न्स के बारे में हम आपको बताएंगे. अगर आप कोई एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं या किसी को या आप स्पाउस का नहीं कर रहे हैं, तो इट्स गोना हैव नो बेयरिंग्स ऑन इट. मगर अकाउंट्स के बारे में हम आपको बताएंगे, इसका जो अकाउंट से आपको इससे कनेक्शन है. आपको प्रोग्राम में कीप वाचिंग द प्रोग्राम, हम आपको जवाब देंगे. थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. एंड शाहिद साहब, अभी आप ये एक्सप्लेन कर रहे थे about this 18,600 which is quite high for majority of the people who are working on minimum wage, which at present is £7.20. But you know, unfortunately this is the law. The law says that if you want to bring a spouse over, then the financial requirement is 18,600. Shahid Saab, आपको ये पता ही था, obviously this is a very difficult situation and people is challenged with the High Court upheld it and ये previous programs हमने discuss कर चुके थे. But let's just, there is a reason for that. They have to, because they have to control immigration because आप ये देखें last जो अभी surveys हुए थे उसमें the British population, UK population has increased by 8 million. Yeah, that is a big this is from the source Migration Watch किससे हमने information दिए, तो obviously इसका तो impact भी होना है. That's right, yeah. I mean, if you look at the government position at the moment, since
2007 when the financial crisis happened. Ji. Going forward from there on, the government has been actually not spending the money because they want to bring the debt under control. So they've not been building houses, they've not been building schools, they've not been investing in the GP practices. And at the same time, there is a open door policy for the EU migrants. So there's been a lot of people coming from the EU and also people from outside the EU because they have legitimate reason to come over here. You know, if somebody's getting married and they are from outside EU, they're entitled to come here. So the trends have been upwards. The problem has happened is that there's been a lack of investment, and which has exacerbated the problem. The issue. The issue. Let's just talk about, so obviously इसमें जो कोई spouse visa पे जाएंगे, so let's just talk उनकी जो requirements है, इनको इसलिए बता रहे हैं because हमारे जो views अभी कोई नए देख रहा होगा उनके पास हो सकता है कोई issue. So if they're in employment, 6 months bank statements, let's just go through that and accommodations. So basically, if you want to sponsor somebody here on a spouse visa, you need to establish, number one, that you are in a financially stable position to support yourself and your future would-be partner. So the criteria, the requirement is 18,600. The onus is on the person who is applying to prove that they meet the requirement. So the one of the ways to establish that is obviously you have a letter of employment from the company where you work to show that you are employed by them on X amount of. Obviously 18,600 is the minimum. A lot of people might be above and beyond. But the bare minimum threshold. उसका ये भी बताते चलते हैं जो ये नहीं simply नहीं रहा किसी ने employ कर लिया, the salary has to be in the bank account. They have to be in ये नहीं रहा lump sum डाल दिया किसी ने. It doesn't work that way because home office because wants to see the everything bank is statements. verified by the home office through the inland revenue. So if you have actually paid any tax on this, you can't just be putting money in your account and showing that this is my wages, because if there isn't any like a trail where that money has come from, then your application will deem to be not meet the requirement. So it'd be invalid. मगर उसका ये भी बताते चलें that अगर वो salary जो होती है has to be every month and every month on the same day, same period. ये नहीं जैसे लोग समझते हैं 2000 अभी डाल दें और 1500 बाद को डाल दें. Well, I mean that looks like that you are maybe like self-employed. We'll come to that in a minute. But if you're salaried, then it has to come on a specific date. Whether it's the 1st of the month, the 15th of the month, the 20th of the month, it has to be on the same. And this has to be the 6 months bank statements, which is a requirement. 6 months. और भी बताते चलें उनका accommodation is very important in this. Yeah, you have to provide accommodation not just for yourself, but the person who will be joining you will be part of your household, your family. Not saying that because mostly people outside EU are seen as big families, extended families, overcrowding. Overcrowding, there is a big issue, and also the fact that there shouldn't be any recourse to the public funds. So you need to have someone to come and look at your accommodation to make sure that it's deemed to be sufficient. So basically, हम ये बताते views को that they could get a letter from a state agent for a house to do a save report. Or the council, local council local authorities. councils do it as well. This service. So basically that has to be done. इसके अलावा let's just talk about the English language जो उन्हें करना पड़ती है in Pakistan. English language is another thing. जी शाहिद साहब कॉल आ रही से लेते हैं फिर आपसे डिस्कस करता हूँ. जी welcome to Legal Matters. Hello. जी और आप अपना नाम बताएं, लाइव ऑन प्रोग्राम है, आप अपना क्वेश्चन बताएं, नाम बताएं पहले में प्लीज. Yeah, sure. My name is Mohammed Numan. Mohammed Numan. Yep. Ji. Yeah. So I'm just going to apply for my British citizenship. Citizenship. Naturalization. Okay. So what happened is about 4 months ago I got a speeding ticket. Okay. I mean penalty notice. So I paid the £500. Yeah. But in return they gave me 3 points on my license. Okay. So there is a problem, criminal offences, there is one section in there. So do I have to mention this one? Yes, हम आपको बताएंगे. You have to declare, disclose is very important. हम आपको तफसील में बताएंगे. यही आपका क्वेश्चन है तो आपके जो पॉइंट्स लगे. ये नहीं और एक क्वेश्चन है जो दूसरी क्वेश्चन है वो मेरा डिवोर्स अभी कोर्ट में है जो डिसीजन अभी तक नहीं आया. इधर जो मैरिटल जो स्टेटस है जी
अच्छा उसमें मैं क्या लिखूं उधर डिवोर्स लिख के उधर मेरा सोलिसिटर का डिवोर्स अभी आपकी हो गई इज इट डिक्री बाय एब्सोल्यूट है आपकी नहीं अभी कोर्ट में अभी कोर्ट में नहीं अभी आप होल्ड करें हम आपको बताएंगे obviously because you need that decree of absolute no if I give a cover letter for this you know this if I say this divorce if I say divorce under process and then I give a cover letter is there any problem for the हम आपको ये आपका जो ये सिटीजनशिप की आप बात कर रहे हैं ना या ओके हम आपको बताएंगे ठीक है नो प्रॉब्लम हम आपको बताएंगे and another thing you know this you know the speeding one if you read this there is a column there this is you don't have to mention the speeding cameras or if you don't pay if you just say about you know bit longer about this it will be very you know आपको बताएंगे don't worry about that कुछ छोटी माइनर चीजें जिस पे doesn't really matter जो होती हैं जहाँ पे convictions हैं we have to वो हम आपको बताएंगे ओके ये लिखना पड़ेगा नहीं ये जरूर बताना ठीक है जी हम आपको बताएंगे डोंट वरी थैंक यू फॉर कॉल मोहम्मद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आगे बढ़ते हैं कॉल आ रही से शामिल करते हैं वेलकम टू लीगल मैटर्स हेलो hi brother hello जी I'd like to have a message you know brother you know my son wants to bring his wife from Pakistan yes okay can we have your name please first of all it's Zulfikar Hussain okay Mr. Zulfikar Hussain and you're saying your son wants to bring his wife over yeah he's a British citizen. Yeah. You know, because I've asked a few people, brother, and people are not telling me the right things. Okay. They're just making up as they're going along, so I thought I'd rather ask you, brother, since I've been looking on the stage. Yeah, you're welcome. What is your question regarding your son? How much, I know it's 18,600 a year, but what else do I need with that? I mean, you know, the fees for the thing. Sure. Is he currently in employment or is he in self-employment? He was a self-employed, but he's going into full-time employment now, brother. So you just want to just help me out in that. Right. Help, you know. Obviously, then that has an impact on the application. That's why I was asking. Thank you. Okay, so he's was self-employed. Does he need to get 6 pay slips? I've been told. Yeah, if he's in full-time employment, and he needs to be earning £1,800 a month or £700 a month, something £1,700 a month. Is that right? Yes, we don't know exactly the breakdown how much it is, but roughly speaking, equates to that much. But what we'll do, we'll give you an explanation about what he really needs to bring document-wise and how you need to do the application. On the screen, you'll notice you will have our details on there, and then possibly an email address will be running through it at some stage. We'll make sure that you do get that. If you do feel you need to talk to us, then we'll be more than happy to provide that advice to you. And so thank you for your calls, of Kasab. Oh, thank you very much, big brother. One last thing before you go, you know, the solicitor fees, no one seems to be telling me about that. Anyway, whoever I'm asking, they're making up as they're going along, so they just want exact fee, what the fee should be in total, do you know? Well, for the citizenships, right? Okay, we'll tell you. Spouse fees. Is it spouse fee you're asking for? No, he's married to her, brother, but he wants to bring her to the UK now, so So you want to know how much the fee is going to be for the application? Yes, please. We'll tell you. Okay then. Thank you very much. Shukriya. Okay. Khuda Hafiz. शायद obviously बड़े questions आ रहे हैं, topic भी बड़े छेड़े हुए थे आपसे. We're going to come back onto them. अभी हम break की तरफ जा रहे हैं. We're going to be right back after a few minutes. अपने calls रखें. We'll try our level best to give you generic advice. और अगर आपका कोई question in regard to immigration or litigation, then we're more than happy to take your call. We'll be back in a few minutes.